Assalamu alaikum friends, welcome to Knowledge TV KTV. Today with a new topic and that is about, on and about to. These are three prepositions that we use in daily life. But actually हम क्या करते हैं? हम mistake करते हैं about use करने का, on use करने का and about to का. So I will explain it very briefly so you might uh, avoid these mistakes using this preposition especially. ओके सो एक सीरीज हमने स्टार्ट की है इंग्लिश ग्रामर का। इससे पहले इंग्लिश लैंग्विस्टिक की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो भी अपने चैनल पे अपलोड किया है, ठीक है। और इसके अलावा जो इंग्लिश की हिस्ट्री है उस पर भी बहुत से वीडियो बनाए हैं, तो अगर आप इंटरेस्टिंग है तो चैनल पे देख सकते हैं, नॉलेज टीवी के टीवी पे। तो लेट्स टेक अ स्टार्ट फ्रॉम टुडे टॉपिक दैट इज अबाउट, where about is used. Here you know that about we use about to talk about ordinary more general kinds of communications, ordinary things which are not specific. So you used what? About. For example, a book for children, a book for children about Africa. एक बुक है जो अफ्रीका के बारे में है। तो अब आपको पता चला कि अफ्रीका के बारे में तो बुक है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि अफ्रीका की जियोग्राफी के बारे में है, ठीक है। द बुक इज अबाउट द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका, or the book is about African peoples. So we are not specific about the things. Okay, so journal or ordinary things, when we communicate to each other, so we usually use about. Okay, the next is on, where to be used on. On suggests that a book, talk, etc. is more serious, suitable for specialist. For example, when we talk about something, for example, a specialist, suitable specialist. For example, a person is special in English grammar, or a person is specialist in economics. So we usually used what? On used. Example, a lecture on African history. A lecture on African history. So here is African. Okay, African history. The thing is here is suitable. That what about a lecture is what about that is on history, on African history. The things are here is a little bit specific. Okay. The next is about to. About plus infinitive with to means going very soon. एक्चुअली अबाउट टू हम तब यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल तब हम करते हैं जब समथिंग इज नियर टू हैपन। ओके, फॉर एग्जांपल ऐसे आई वाज अबाउट टू गो टू बेड व्हेन टेलीफोन रिंग। अच्छा, थर्ड वन इज अबाउट टू, वेयर इट टू बी यूज अबाउट टू। अबाउट टू यूज स्पेशली व्हेन समथिंग इज हैपन रिसेंटली। ओके, अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा सा मुश्किल, मैं एक्सप्लेन करता उर्दू में भी, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी सके। अबाउट टू हम तब यूज करते हैं जब हम कोई एक्शन करते हैं या कोई काम करते हैं और वो रिसेंटली हो जाए। फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल को देखिए, आई वाज अबाउट टू गो टू बेड व्हेन द टेलीफोन रंग। ठीक है, मैं अभी बेड को जा रहा था कि टेलीफोन की घंटी बज गई। ठीक है, अबाउट टू रिंग मतलब अबाउट टू गो टू बेड, अबाउट टू हियर। ओके, मतलब अब मैं जा रहा था कि क्या हो गया कि टेलीफोन की रिंग बज गई। तो अबाउट टू यूज फॉर समथिंग व्हिच इज गोइंग टू वेरी सून, मतलब बहुत जल्द जब कोई काम होता है, ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं? अबाउट टू वहां पर यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अबाउट, ऑन एंड अबाउट टू के कंसेप्ट में क्लियर आ जाएगा। Little bit explain again that where to use about. About is used, we use about to talk about ordinary more general kinds of communication. About यूजुअली कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? जब हम ऑर्डिनरी, ठीक है, चीज के बारे में बताते तो हम फिर अबाउट टू अबाउट यूज करते हैं। ठीक है, ए बुक फॉर चिल्ड्रन अबाउट अफ्रीका। ठीक है, एक बुक है जो चिल्ड्रन अबाउट अफ्रीका है। तो हेयर अफ्रीका के मैंने फर्स्ट भी एक्सप्लेन किया है कि अफ्रीका के बारे में है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि अफ्रीका की जियोग्राफी के बारे में है और अफ्रीका के पीपल के बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये पता नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग वेरी स्पेसिफिक टू यूज अबाउट,
The second is on. On is used something which suggests that a book, talk, etc. is still suitable for. जब कोई चीज एक चीज के लिए सुटेबल हो, ठीक है, तो तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो तब हम ऑन इस्तेमाल करते हैं. लेक्चर ऑन अफ्रीकन हिस्ट्री. ऑन अफ्रीकन हिस्ट्री लेक्चर यहाँ पर हमने यूज किया, तो ऑन यहाँ पर इस्तेमाल होता है. लेक्चर ऑन अफ्रीकन हिस्ट्री. अबाउट टू कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, अबाउट टू हम इस्तेमाल करते हैं जब समथिंग इज going to very soon, especially about plus infinitive. Infinitive क्या होता है, is usually the two form, especially the best form of the verb with to. जब हम इसके साथ going यहाँ to जो इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या है, ये हमारे साथ infinitive है. तो you usually used about to with infinitive verb. Okay, so something happened recently, ठीक है, या जल्द होने वाला है, तो तब हम